Dear student, welcome to this video. Now I am starting. Uh, the chapter Java. Java. What is Java? Now Java is a programming language. What is programming language? Now computer programming is a process of designing, writing, testing, debugging, and maintaining the source code of computer program written in a particular programming language. ताहले तमर प्रोग्रामिंग फास्ट आम जाभा प्रोग्रामिंग फंडामेंटाल पढ़ुचे प्रोग्रामिंग फंडामेंटाल रे तमे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को कौन कहूचे ना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग डिजाइनिंग राइटिंग testing and debugging ना डिजाइनिंग करुचे आम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग रे राइटिंग कोड राइटिंग करुचे टेस्टिंग करुचे और डिबगिंग करुचे है ना डिबगिंग मीन्स आपको आम रन करुचे आइदर इफ द कोड इज करेक्ट देन इट विल बी रन otherwise it will not run and it will not getting the answer or result. So computer programming is a process of designing, writing, testing, debugging, and another is the maintaining the source code of computer program written in a particular programming source code. जो कोड आम लिखुचे प्रोग्रामिंग फास्ट आम दौचे क्या आम सफ्टवेयर को प्रोग्राम कोड आम लिखुचे सोर्स कोड कन्वर्ट होची कोठी ऑब्जेक्ट कोड को कन्वर्ट होला पर आम आंसर पाउचे बा आम लैंग्वेज आम आंसर को पाई पारुचे. द पर्पज ऑफ प्रोग्रामिंग इज टू ऑर्गेनाइज इंस्ट्रक्शन दैट आर कैपेबल ऑफ सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम है ना कौन प्रोग्रामिंग रो पर्पज होची आमे कैपेबल हे पर रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पे. The latest and most versatile and efficient language is object-oriented programming language. Latest and versatile efficient language is object-oriented programming. अच्छा object-oriented programming कहीं कैसे ना Java is a object-oriented programming language. Where a programming task was broken into object, each object is capable of encapsulating its own data and method. ओन डाटा और मेथड को एनकाप्सुलेट मतलब जमी कैप्सूल भितर तुम विटामिन भरी रही है सेमती डाटा और मेथड को ओन कैप्चर भितर कैप्सुलेटिंग करने आम एक्चुअली सब टोटाल तुम ऑब्जेक्ट गुड़ाक ईच ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ एनकाप्सुलेट ओन डाटा और मेथड को ऑब्जेक्ट को कौन करे ना एनकाप्सुलेट कर रखे. There are several object-oriented programming language, Smalltalk, C++, Java, etc. In this chapter, we learn a concept that is central to the object-oriented programming. ताले object-oriented programming रे different feature अच्छी जो feature उड़ा तमरे को अल्प explain है जी. First time पढ़िबा data encapsulation. What data encapsulation what na object oriented programming wrapping of data and method together in a single unit which is known as data encapsulation. Single unit रे कौन करे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैप्चर कर रखे रैपिंग कर रखे से कहुए डाटा एनकाप्सुलेशन जमी कैप्सूल भितर विटामिन रही है सेमती डाटा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कौन करे एनकाप्सुलेट कर रखे से कहुए फास्ट फीचर है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फास्ट फीचर है आम कह डाटा एनकाप्सुलेशन अच्छी ऑब्जेक्ट अच्छी क्लास अच्छी आम डाटा एनकाप्सुलेशन को आग जाऊे. तापर पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज द programmer to give a generic name of various method or operate to minimize his memorizing of multiple names. Poly means many.
है मॉर्फिज्म मीन्स प्रोसेस तो मेनी प्रोसेस रे से कौन कर प्रोग्रामिंग ऑपरेट करुच्ची इनहेरिटेंस एनेबल्स द प्रोग्रामर फॉर इफेक्टिवली यूटिलाइज ऑलरेडी एस्टाब्लिश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए क्लास इन न्यू क्लास एंड एप्लिकेशन गोटे क्लास कैरेक्टरिस्टिक जदि आम आदर क्लास यूज करुचे आम ये इनहेरिटेंस कौचे इनहेरिटी गोटे पिता ठारू तार पुत्र जमती इनहेरिट करिया तार कैरेक्टर आणुची सेमती इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट मध्य प्रोग्रामिंग फंडामेंटल तुम यूज होइछि इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट देन आम जाऊे द मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कौन ना मेजर कंपोनेंट रे रिमेंबर फास्ट है क्लास मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फर्स्ट क्लास देन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट क्लास ऑब्जेक्ट देन data members and methods then for a access specifier and a visibility mode visibility mode then first I am explain class. A class is used to encapsulate data and method together in a single मन रख पिला माने क्लास रे कौन होची टोटाल तुमर डाटा आउ कौन मेथड एनकैप्सुलेट होची सिंगल यूनिट रे है जेमती आम कहवा क्लास एग्जांपल जदि देन ऑब्जेक्ट पढ़ सारे तो क्लास आउ थे कह तुमको क्लास मन रख तुम डाटा और मेथड को टुगेदर कर रखुची ऑब्जेक्ट कौन ना ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास एग्जांपल जेमती फ्रूट्स रे आम जीवा ऑरेंज एप्पल बनाना these are the object of a fruit class these are the object of a fruit class so object is called as a instance of a class this is the basic concept of a class and object remember this then it helps the programmer class helps the programmer to keep the data members in various visibility mode रे आपको रखे हेल्प करे कि क्लास डिपेंडिंग अपन व्हाट काइंड ऑफ एक्सेस नीड्स टू बी प्रोवाइडेड इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एप्लिकेशन रिमेनिंग पार्ट ऑफ एप्लिकेशन को काइंड एक्सेस नीड कर दिस विजिबिलिटी मोड आर कॉल्ड एज एक्सेस स्पेसिफायर से विजिबिलिटी मोड को कहा एक्सेस स्पेसिफायर है दिस इज कंप्लीटेड योर व्हाट क्लास एंड ऑब्जेक्ट देन क्लास ऑब्जेक्ट देन डाटा मेंबर एंड मेथड data member and method data member example int a integer data type a है variable तो these are the data type then access specifier and visibility access specifier 4 types one is private 2 public 3 protected and a what private public protected out रहुछि तमर कोन what default पब्लिक प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट प्राइवेट बेसिकली पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट को आम देखुचे तेणु क्लासीफाइड कराई तेणु डिफॉल्ट रोचे देर आर क्लासीफाइड एज प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड देन अनदर इज द डिफॉल्ट दिस इज completed your what class object and data member method as a specifier the next class आमे जीवा नेक्स्ट क्लास रे कौन देखिबा ना एक्सेस स्पेसिफायर एंड टाइप ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर थैंक यू।